नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धोरिया। गुरुवार को भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली मौद्रिक नीति समिति के नतीजों का ऐलान किया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के मुताबिक रेपो रेट बिना किसी बदलाव के साथ 4% रहेगा। मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि समिति ने रिवर्स रेपो दर को 3.35% पर बरकरार रखा है। एमएसएफ रेट और बैंक रेट बिना किसी बदलाव के 4.25% रहेगा। आरबीआई ने मौद्रिक नीति को लेकर उदार रुख बरकरार रखा है। इसका मतलब ये है कि बैंक कर्ज की मासिक किस्त में कोई बदलाव नहीं होगा। In this overall environment and this background, the Monetary Policy Committee, that is the MPC, met on 8th, 9th and 10th February 2022, and based on an assessment of the current macroeconomic situation and outlook, it voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 4%. The MPC also decided by a majority of 5-1 to continue with the accommodative stance as long as necessary to revive and sustain growth on a durable basis and continue to mitigate the impact of COVID-19 on the economy, while ensuring that inflation remains within the target going forward. The marginal standing facility, that is MSF rate and bank rate, remain unchanged at 4.25%. The reverse repo rate also remains unchanged at 3.35%. आरबीआई गवर्नर के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 में जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रहने की उम्मीद है। अगले वित्त वर्ष में खुदरा मुद्रास्फीति 4.5% रहने की संभावना है। दास ने कहा कि मुद्रास्फीति चालू तिमाही में बढ़ेगी, लेकिन ये दायरे में रहेगी। अगले वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में नरम होगी। Government's thrust on capital expenditure and exports are expected to enhance productive capacity and strengthen aggregate demand. This would also crowd in private investment. The conducive financial conditions engendered by the RBI's policy actions will provide impetus to investment activity. The surveys done by the Reserve Bank reveal that capacity utilization is rising, and the outlook on business and consumer confidence remain in optimistic territory, which should support investment as well as consumption demand. The prospects for agriculture have brightened on good progress of winter crop sowing. Overall, there is some loss of momentum of near-term growth, while global factors are turning adverse. Looking ahead, domestic growth drivers are gradually improving. Considering all these factors, real GDP growth is projected at 7.8%. I repeat, 7.8% for 22-23, with Q1 22-23 at 17.2%, Q2 at 7%, Q3 at 4.3%, and Q4 at 4.5%. The inflation projection for 2021-22 is retained at 5.3%, with Q4, that is the current quarter, at 5.7% on account of unfavorable base effects that ease subsequently. In particular, CPI reading for January 22 is expected to move closer to the upper tolerance band, largely due to adverse base effects. Taking all these factors into consideration and on the assumption of a normal monsoon, CPI inflation for 2022-23 is projected at 4.5%. I repeat, CPI inflation for 2022-23 is projected at 4.5%, with Q1 22-23 at 4.9%, Q2 at 5%, Q3 at 4%, and Q4 at 4.22%, with risks broadly balanced. गवर्नर शक्तिकांत दास के मुताबिक भारत दुनिया के बाकी हिस्सों से उबरने के एक अलग रास्ते पर चल रहा है। आईएमएफ के अनुमानों के मुताबिक भारत
प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में साल दर साल सबसे तेज गति से बढ़ने की तरफ अग्रसर है। ये रिकवरी बड़े पैमाने पर टीकाकरण, निरंतर वित्तीय और मौद्रिक सहायता की वजह से हो रही है। ये लगातार 10वां मौका है जब आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।